Hello, welcome to the platform of Chronicle IAS. My name is Prakash Upadhyay. I am the Faculty of Geography, Environment, Ecology and Disaster Management at this platform. Now we are moving to the further next question. Look at the question. Analyze the environmental issue faced by urban areas of UP and their socio-economic impact. क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, जरा ध्यान से सुनो. कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय समस्याओं और उनके सामाजिक आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए. देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन. वन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल इशू which faced by urban areas of UP. This is the first part of the question. And the second part of the question, their socio-economic impacts. So we are just going to break down the question. What is the demand of the question? What is the demand of the question? Because demand of the question is very much important to break down the question. The first question is analyzing. Analyze is a tail word. It is a tail word जिसे हम पुछल्ले शब्द बोलते हैं ना, tail word. Analyze का मतलब होता है कि भाई आप खुद से सोचो कि what are the positive consequences and what are the negative consequences of the particular topic which has been asked by you in the examination. Analyze. The first part of the question is analyze the, look at the question, analyze the environmental issue faced by urban areas. Analyze the environmental issue. Issue faced by UP's urban areas. And the second part of the question is their socio-economic impact. Their socio-economic इम्पैक्ट. तो पहले क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले बताना है कि एनवायरमेंटल इशू कौन कौन सा अर्बन एरिया फेस कर रहा है. सेकंड पार्ट में कि उसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो रहा है. तो मतलब दिस क्वेश्चन आल्सो डिमांड कनेक्टिविटी. ये भी क्वेश्चन कनेक्टिविटी को डिमांड कर रहा है. तो हाउ वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन, कैसे अप्रोच कर सकते हैं. तो बोल सकते हैं यूपीज अर्बन areas facing severe environmental issue UP's urban areas facing severe environmental issue because of a rapid growth of urbanization, industrialization, rapid growth of urbanization, industrialization, as well as growth of population driven by urban attraction. ठीक. तो क्या कहना है, यूपीज अर्बन एरियाज फेसिंग द सीवियर एनवायरमेंटल इशू बिकॉज ऑफ a rapid growth of urbanization, industrialization, as well as growth of population driven by urban attraction.
अर्बन अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि लोग शहरों में रहने के इच्छुक हैं, इस वजह से भी एक एनवायरमेंटल चैलेंज आ रहा है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट काइंड ऑफ यूपी इज फेसिंग, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरमेंटल चैलेंज, what kind of environmental challenge or the issue यूपी फेस्ड, कैसा चैलेंज फेस कर रहा है. तो सबसे पहले यूपी जो है, यूपी इज फेसिंग एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन, वी ऑल आर नो दैट कि बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, because of rapid growth of industrialization, because of rapid growth of urbanization, the constructional activity is rapidly growing. Because of industrialization, the waste materials are growing. Because of urbanization and industrialization, vehicular capacity of UP is increasing, which led to the combined effect of severity of air pollution in the cities like Kanpur, in the cities like Ghaziabad, in the cities like Agra, in the cities like Varanasi, in the cities like Noida. So this is the problem of air pollution. What is the health impact which is associated with this? We all are know that ki high chance of asthma, high chance of bronchitis, high chance of respiratory infections and cardiovascular diseases. ये सारी चीजें इससे कनेक्टेड हैं. सेकेंड वन इज वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन, we all are know that UP, because of rapid industrialization, UP some cities are, some urban cities like Kanpur, like Agra is facing untreated water waste directly penetrate into the river. So water pollution. The second one is, you can say that industrial influence, untreated sewage plants, untreated waters. Next one is solid waste disposal into the rivers. Solid waste disposal into the rivers, and because of this reason the contamination of poisonous matter in the drinking water is hazardous to health. तो इससे क्या हो सकता है भाई, बहुत सारा हेल्थ इशू आ सकता है रिगार्डिंग दी ड्रिंकिंग वाटर. तो थर्ड वन इज नॉइस पोल्यूशन. नॉइस पोल्यूशन कैसे है भाई? तो यूपी हैव, देयर आर सो मेनी सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन. तो पहला तो सोर्स है ट्रैफिक कंस्ट्रक्शन, रैलीज, फेस्टिवल्स. तो रैलीज, ट्रैफिक, फेस्टिवल्स, ये सब है रिलीजियस एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्रियल एरियाज. इट विल अफेक्ट द मेंटल हेल्थ, it will affect the mental health of person. समझ पाए? तो ये मेंटल हेल्थ को. नेक्स्ट क्या हो सकता है? अर्बन फ्लडिंग एंड ड्रेनेज इशू. अर्बन फ्लडिंग एंड ड्रेनेज issue, because of
unplanned and unscientific urbanization led to the condition of urban flooding and drainage issue. Encroachment, because of encroachment of natural drainage, because the allotment of land area in near the river beds, तो इसी को बोलते हैं unscientific planning which creates a urban flood. Next, loss of green urban green spaces, loss of urban green spaces because of rapid growth of industrialization and urbanization and demand of more and more infrastructural development is reducing the loss of urban green spaces, which will impact to change the cities like Kanpur, the cities like Ghaziabad, Noida into the urban heatland, ठीक. तो नेक्स्ट वन क्या हो सकता है? ग्राउंड वाटर डेप्लीशन. नेक्स्ट वन इज ग्राउंड वाटर डेप्लीशन. ग्राउंड वाटर डेप्लीशन, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन. इससे क्या है भाई? बिकॉज ऑफ रैपिड growth of industrialization and urbanization, it will stress the over exploitation of water, give the stress on the groundwater, because the urbanization, it means there is a less space and more people are living, and because of this reason the demand of various kind of water uses will increase, and it will lead to the condition of water stress, and after that it will lead to the condition of water depletion. What is the socio-economic impact? What is the socio-economic impact? So now in the next section we will going to discuss what is the socio-economic impact. What is the socio-economic impact of this? The first one is health. There is a various kind of diseases and mental stress has been created because of this. One is higher health cost, reduced life expectancy, and as well as reduce the life expectancy. Higher health cost, reduce life expectancy. Next one is it will create urban poverty. Urban poverty कैसे? Because we all know that poor communities living in a high risk polluted zones. Next one is economic productivity. Economic productivity. We all know that the urban area has their high economic productivity, reduce the work efficiency, more sick peoples live in the areas. So it will hamper the economic productivity of the urban areas. It will increase the urban poverty. Next one is it will also increase the migration stress. Migration, what does means by the migration stress? It means that rising rural urban migration increase pressure on housing, water and sanitation. तो इससे क्या होगा? और लोग आएंगे. और क्या सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है? देयर इज अ अर्बन पॉवर्टी, देयर इज अ inadequate educational inadequate education, not educational. Inadequate education. Why?
because in the urban areas the educational facilities are so much expensive. Because of that, this reason, the poor class peoples are not afford the good kind of education. Next, infrastructural cost, frequent flooding and pollution damage roads, building and drainage system. Next one is social disparity, environmental injustice, slums and poor areas face the worst environmental condition. तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि what are the social and environmental impact. तो environmental impact क्या हुआ? The poor class peoples are living in already in a poor condition. Because of this reason, peoples are facing more severe challenges to live. तो इस तरह का अप्रोच आपका होना चाहिए. अब आप बोल भी सकते हैं इसमें कंक्लूजन में कि उत्तर प्रदेश इज recently last 2 decades the growth of rapid urbanization and industrialization is very high. Because of that reason, the environmental pollutions or environmental degradation at its peak, and it hampers the socio-economic development of the peoples of UP. इस तरह का कुछ आप अप्रोच बना सकते हैं. फॉर कॉन्करिंग, इसमें लिख सकते हैं कि फॉर कॉन्करिंग एंड प्रिवेंटिंग और कंट्रोलिंग दिस सिचुएशन, ओनली वे टू सेंट्रलाइज अर्बनाइजेशन. To centralize urbanization, there is a prevention and monitoring of industrial waste, as well as there is a implementation of the policy of odd even vehicular policy. ये सब implement करना पड़ेगा. Also, there is a development of slum authority to providing the sustainable houses, sustainable education with the clean and sanitation projects. ये सब करके आप इनको अच्छा कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं. थैंक यू. नाउ वी आर मूविंग फर्दर, डिस्कस द 18th number question. Look at the question. Enumerate the distribution of wetlands, Ramsar sites in Uttar Pradesh and explain their ecological significance. Enumerate is a tail word. And in so many times we have discussed what is the importance of tail word and how tail word is determined and how tail word is controlling the overall structure of answer. Okay, now the enumerate the distribution of wetlands in Uttar Pradesh. This is the primary keyword in the question, and explain is another tail word. एक्सप्लेन देयर इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. हिंदी में एक बार पढ़िए, क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में आर्द्र भूमियों रामसर स्थलों के वितरण को सूचीबद्ध कीजिए तथा उनकी पारिस्थितिक महत्ता को स्पष्ट कीजिए. क्या क्या बताना है? तो कह रहा है एनुमरेट दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटलैंड्स रामसर साइट्स इन उत्तर प्रदेश एंड एक्सप्लेन देयर इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. ओके, लेट्स ट्राई टू ब्रेक दी क्वेश्चन. हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई? पहले ब्रेक करेंगे क्वेश्चन को. तो नाउ देयर इज अ टेल वर्ड विच इज नोन एज इनुमरेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनुमरेट? क्या मतलब होता है? इनुमरेट का मतलब क्या होता है? डिकोड और लिस्टिंग ऑफ एनीथिंग. कुछ भी दिया है उसकी क्या करनी है? लिस्टिंग करनी है. बाई वन बाई वन क्या करना है? लिस्टिंग करनी है. वन बाई वन देयर इज अ लिस्टिंग. तो पहले सेंटेंस में क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनुमरेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटलैंड्स और द रामसर साइट्स इन उत्तर प्रदेश. हाउ वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन? कैसे अप्रोच कर सकते हैं? तो वी आर starting from intro. We are going to start from intro, that UP is the home of so many ecologically significant
sites including Ramsar sites as well as national parks, ठीक, which provides not only the ecological balance as well as it provides distinct kind of biodiversity. So क्या पता चला कि यूपी is a home of so many ecological significant sites including Ramsar sites as well as the national parks, which provides not only the ecological balance as well as it provides the distinct kind of biodiversity. We all are know that ki these wetlands, or you can also add ki these wetlands are crucial for the ecological balance as well as maintaining the biodiversity and to hit the national target of maintaining the biodiversity. Okay, now this is the intro of this question, and after that the second part of this question is distribution of Ramsar sites. So now here I have to earlier write all the Ramsar sites for saving the time. One is Nawabganj Bird Sanctuary, Unnao. This one is first. The Parvati Arga Bird Sanctuary is Gonda, the second one. The Saman Bird Sanctuary is Manpuri. The Bakhira Wildlife Sanctuary is Sant Kabir Nagar. The Sandi Bird Sanctuary is Hardoi. Sarsai Nawar Wetland in Etawah. Sur Sarovar is Agra. It is a artificial lake. It is a artificial or man-made lake. Upper Ganga River Bridge Ghat to Narora and Haidarpur Wetland, Muzaffarnagar. This is all the Ramsar sites in UP, or UP have 10 Ramsar sites, and in India UP is the second highest number of Ramsar sites UP have. Okay, now we are moving to the second part of the question. Explain the ecological significance. Explain the ecological significance of Ramsar sites in UP. अब इसमें क्या करना है भाई? So now we have to just elaborate all the significance of Ramsar sites. Like Ramsar sites are providing biodiversity hot spot. They are providing the place of biodiversity, or they are considered as a place of biodiversity hotspot. How? Because it is a home of so many unique flora and fauna, which only found in the specific area like any wetland area, because wetland ecosystem have the unique characteristic and unique characteristic in all the aspects which are differ from the aquatic
ecosystem as well as the terrestrial ecosystem. Okay, now it provides so home of so many unique flora and fauna. It provides the home or the place for migratory birds like Siberian cranes. It also provides home for, it also provides home as well as the living sustainability for the गंगा डॉल्फिन. तो आप ये बातें इसमें लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं भाई, बता सकते हैं कि स्पीसीज लाइक इंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक गंगा डॉल्फिन इज सेफर फॉर द सेफर प्लेस एज अ वेटलैंड. नेक्स्ट क्या कह सकते हैं, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स livelihood opportunity for the locals. Like there is a emerging trend, of watching and looking bird सेंचुरीज. इमर्जिंग ट्रेंड है, क्या है, लोग चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं, बर्ड सेंचुरी. एंड इट ऑल्सो कनेक्टेड टू द इको टूरिज्म. सो आप ये कह सकते हैं. और क्या कर सकते हैं, इट ऑल्सो प्रमोट्स, वेटलैंड्स ऑल्सो प्रमोट्स द activities like fisheries, aquatic फिशरीज मछली पकड़ने के लिए, एक्वेटिक चीजें, एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म. तो इको टूरिज्म हो गया, एग्रीकल्चर. ठीक, तो ये हो गया. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स the job opportunity for tourist, guide, ecological guider, and it also promotes local products which made by the local people. तो ये लाइवलीहुड के लिए अपॉर्चुनिटी है. और क्या कर सकते हैं, इट इज द नेचुरल वाटर प्यूरिफिकेशन. It is a natural source of water purification and toxic elements has been eliminated. Toxic elements has been eliminated. और क्या कर सकते हैं भाई, it is a good source of groundwater. It is a good source of groundwater recharge. It is a good source of groundwater recharge. It also provides the climate regulation, and it also provides the management of flood control. It also provides the management of flood control and
it also regulates the climate, and that's why it is known as the best source of climate regulation, or best way to regulate the climate. Next, it have some cultural and educational importance as well. It have some cultural and educational importance. What is the educational importance? Like, we all are know that the conservation of wetlands and promoting the awareness, promoting the awareness about the sensitivity of wetlands, and there are so many local tribes and local peoples have their traditionally, they are traditionally connected to the connected to the wetland site in a different aspect. Like, ऐसा कह सकते हैं कि भाई there are so many traditional belief, there are so many folk culture is associated with the wetland sites. तो ये इस तरह का चीजें आप बता सकते हो. अब इसके कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि रामसर sites are not only the sites, they are the very much important for the ecological sustainability as well as the maintaining the biodiversity. It will help to maintain the biodiversity, not only maintain the biodiversity, as well as to achieve and hit the India's target, and helping to achieving the India's target in ecological sustainability. ऐसे करके आप इसको सम अप कर सकते हैं. ठीक, थैंक यू. To the next question, look at the 19 number question. Analyze the threats of flora and fauna in Uttar Pradesh and suggest the conservation strategy. क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए उत्पन्न खतरों का विश्लेषण कीजिए. रिमाइंड द वर्ड. What are the analyze the threats of flora and fauna in Uttar Pradesh and suggest the conservation strategy. It means this question requires two things. Firstly, you have to find out the threats in context of flora and fauna, and also you have to suggest some measures. Also you have to suggest some measures to conserve, measures to or for the conservation of flora and fauna. So now we are just starting from the intro. We are going to start from intro, how we can approach this question. What are the approach? इंट्रो में हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? तो कह रहा है कि एनालाइज द थ्रेट्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रो with UP have humongous population and a rapid growing urbanization, industrialization,
and invasion of protected area because of land more land demand so that it threats the flora and fauna of यूपी. अब देखो इसमें हमने मैन मेड कॉज बता दिया. यूपी हैव ह्यूमंगस पॉपुलेशन and rapid growing urbanization, industrialization and invasion of protected area because more land demand so that it threats the flora and fauna of UP. Now we are going to mention all the threats one by one. Like the first threat is habitat loss. We all know that UP have humongous population and UP have the highest population amongst all states, and because of this, not only this, also there is a demand of rapid urbanization, there is a demand of rapid industrialization, and there is a demand of not only the urban area, also in the rural area there is a demand of many houses. And because of this reason, the habitat loss as well as the fragmentation of land is more. And because of habitat loss, why habitat loss? Because of deforestation. The rate of deforestation is higher. The rate of deforestation because of rapid urbanization, because of rapid growing population. And we also know that the total fertility rate, TFR rate, is high in UP as compared to the national rate. Now second one is because of rapid growing urbanization and industrialization, there is a issue of water pollution. And because of water is polluted, because so many in the river system like Kanpur, Agra and Etawah, Varanasi, तो इन सब जगहों पे क्या हो रहा है, there are the lot of waste materials are directly influx into the river Ganga, and it will damage the flora and fauna sitting in the aquatic or the river system. So आप ये भी लिख सकते हो. Third one is over exploitation of resources. Which will threat the flora and fauna in UP. What is the means of over exploitation of resources? Like overgrazing, overpoaching, illegal, you can say that illegal logging, illegal lodging बोलते हैं, illegal lodging. Though these are the issue. Okay, now there are also the new emerging threat of conflict between man and wild. Recently in the district of Bahraich and Gunda, जो आपने देखा कि रिसेंटली क्या हुआ था हमारे यहाँ, कि हमने देखा कि बहराइच और गुंडा में
मैन और वाइल्ड का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, एंड बिकॉज ऑफ दिस सम एक्सटेंट मैन इज हॉन्टिंग, एंड यू कैन से दैट मैन इज ट्राइंग टू किल द एनिमल्स। क्या करता है, अपने बचाव के लिए आदमी इसको मार भी देता है, तो ये भी एक देखना है। एंड फोर्थ वन इज, फिफ्थ वन इज invasive species. Invasive species, if there is an intrusion of, or if there is an introduction of new animal in a set biodiversity zone, किसी सेट बायोडाइवर्सिटी जोन में अगर किसी न्यू एनिमल को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, it will lead to the condition of ecological balance, because sometime the native animals cannot maintain, you can say that, the good environment with the native species, with the invasive species, or sometime invasive species are so much attacked in nature. तो अटैक वाला नेचर में रहता है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है, जो नेटिव एनिमल्स होते हैं उसको सप्रेस कर देता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द क्लाइमेट चेंज। द क्लाइमेट चेंज, अब इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन यू हैव टू मेंशन दैट lack of awareness and enforcement. So these are the some challenges in front of UP's flora and fauna. In the next slide we have to just suggest some measures. You have to suggest some measures. The first measure is restoration of habitat. पहला क्या कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, रीफॉरेस्टेशन थ्रू दी एफॉरेस्टेशन, एंड रीफॉरेस्टेशन। ठीक, तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, तो बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग एंड रिसर्च, बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग एंड रिसर्च। What does it means by biodiversity monitoring? It means there is a watching of protected areas, and there is also new research how to protect them, as well as increase their population. नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, पोल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर्स, पोल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर्स कर ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें पोल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर्स में, जैसे स्ट्रेंथनिंग द स्कीम लाइक नमामि गंगे। ठीक, नेक्स्ट और हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोलिंग द मॉनिटरिंग से क्या होगा, इलीगल पोचिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द रिसोर्सेज, providing protection for the resources, जैसे ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल करने का, ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं,
इलीगल पोचिंग को कंट्रोल कर सकते हैं मॉनिटरिंग के थ्रू। और क्या कर सकते हैं, कह रहे हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से क्या होगा, लोकल अवेयरनेस बढ़ेगा। और व्हेन द लोकल पीपल्स आर सेंसिटिव एंड अवेयर, इट मीन्स कि दे आर ऑल अवेयर एज वेल एज दे आर ऑल्सो द इंडिविजुअल मॉनिटर्स फॉर द लोकल इकोसिस्टम। क्या करेंगे, जो भी लोग आएंगे वहां पे टूरिज्म को लेकर के घूमने के लिए, उनको भी वॉच करेंगे कि वो भी कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो विच कैन हार्म द ecological setting of that particular area. Community participation and promoting the ecotourism। ठीक, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, और हम कंट्रोलिंग दी इन्वेजन और इन्वेजिव स्पीसीज। क्या कर सकते हैं, कंट्रोलिंग दी कंट्रोल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, कंट्रोल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग द लॉजिकल, और यू कैन से दैट द strengthening the legal and institutional framework which can regulate the threats, not only threats, which also monitoring and regulating the whole ecosystem of UP, मतलब strengthening the legal and institutional framework। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, strengthening the legal and institutional framework, So these are the some suggestive measures how we can control the threats of flora and fauna in UP. You can also add here some climate resilient planning, because we are facing climate resilient planning as well, because we are facing the सीवियर क्लाइमेट चेंज। तो ये सारी चीजें लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इसके कंक्लूजन में बता सकते हैं कि द बायोडाइवर्सिटी ऑफ यूपी इज अंडर द थ्रेट एंड सीवियरिटी। सो वी कैन not only we can, you can say that we can not only try to protect them, also try to enhance and flourish the ecosystem as well as the flora and fauna of UP with all these measures which has been earlier mentioned। ठीक, ये कर सकते हैं। थैंक यू। लुक एट द 20th नंबर ऑफ क्वेश्चन। critically analyze issue related to the sustainable use of water and forest resources in UP। क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जल एवं वन संसाधनों के सतत उपयोग से संबंधित मुद्दों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। दिस इज द टेल वर्ड, एंड व्हाट डज इट मीन्स बाय क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकली एनालाइज इट मीन्स कि आप किसी चीज की समीक्षा ऐसे करें जिसमें कि उसके साथ साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ साथ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर भी उतना ही लाइट थ्रो हो। Okay, now how we can approach this question? How we can approach this question? Firstly, we are just going to just break down the question। पहले क्या कह रहा है, critically
एनालाइज। तो क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या है? देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ओके, क्या करना है? क्रिटिकली एनालाइज करना है किसको? तो कह रहा है फॉरेस्ट रिसोर्सेस को। क्रिटिकली एनालाइज क्या करना है? फॉरेस्ट रिसोर्स एज वेल एज द वाटर रिसोर्सेस। उनके किस चीज को? सस्टेनेबल यूज को। ठीक, तो दिस इज द होल क्वेश्चन। जस्ट वी आर ब्रेक डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर दिया है। क्या बताया है? क्रिटिकली एनालाइज द इशू रिलेटेड टू द सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन यूपी। ठीक, तो आओ भाई जरा देखें कि इसे कैसे क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं यूपी हैव rapid growth of population, urbanization, comma, industrialization. Because of this, there is a severe chances of severe chances of severe chances of threatening severe chances of threatening the forest resource as well as water resources. And because of this, UP needs a combined effort for its सस्टेनेबल यूज। ठीक, तो इस पर आप ऐसे कह सकते हैं। अब बता सकते हैं कि व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ यूपी इन फॉरेस्ट। तो व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ यूपी इन फॉरेस्ट? तो यूपी's टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज ऑलमोस्ट अबव 9%। ठीक, अब इसके साथ साथ बता सकते हैं कि व्हाट आर द इशू रिलेटेड टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेज यूज। तो एक आप यहाँ पे एरो बनाइए, एंड व्हाट इज द इशू रिलेटेड द फॉरेस्ट रिसोर्सेज यूज। तो पहला क्या है भाई? सबसे पहला इशू है देयर इज अ डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहला इशू क्या है? डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन, रैपिड ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रैपिड ग्रोइंग कॉमर्शलाइजेशन एज वेल एज द नीड ऑफ सो मेनी होम्स बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। तो सबसे बड़ा बात क्या है? डिफॉरेस्टेशन एंड इंक्रोचमेंट। Why encroachment? Because of population, industrialization, commercialization. Okay, next, over exploitation of timber and non
टिम्बर या नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे हनी हो गया, इस तरह का। तो अब इसका क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टिम्बर एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो नेक्स्ट और क्या कह सकते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया, ये हो गया। वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ environmental laws, weak implementation of environmental laws which cannot providing the safeguarding as well as the claim of the native or the local tribes of the local tribes or the peoples. And next, loss of biodiversity because of illegal migration and illegal settlements. और क्या है, there is a privatization इन फॉरेस्ट। क्या हो गया, जैसे इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमने पीपीपी मॉडल ले आए, तो जो प्राइवेट प्लेयर्स आए दे आर मोर इनकम सेंट्रिक रादर देन द एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी। तो ये है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ or you can say that illegal trading of animals illegal trading of animals, ठीक। और यहाँ पे क्या है, इलीगल ट्रेडिंग, पोचिंग, ये कह सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन हो गया, और देयर इज अ issue of over unregulated tourism, issue of waste management as well. These are the some issue. अब यहाँ क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्लाइड में चलना पड़ेगा। व्हाट आर द इशू रिलेटेड टू द वाटर रिसोर्सेज, इशू रिलेटेड टू द वाटर रिसोर्स इन यूपी। तो व्हाट आर द इशू, द फर्स्ट वन इज वी हैव टू mention the current status. We all are know that the UP's lifeline is dependent on the river water supply, and river Ganga is the lifeline of UP because river Ganga is passing to the mid and river Ganga is the largest basin in the UP, ठीक। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, यहाँ पे पहला इशू वाटर रिसोर्सेज के साथ क्या है, द फर्स्ट इशू इज pollution and waste untreated waste, pollution and untreated waste, influx directly into the Ganga and its tributaries, ठीक। The second one is over exploitation of ground water through the
through the submersible, through the इरिगेशनल पर्पज, थ्रू दी ड्रिंकिंग पर्पज। ठीक, लोग उतने अवेयर नहीं हैं वाटर रिसोर्सेज को लेकर के, ग्राउंड वाटर को, तो नल का पानी खुला है तो खुला ही है, गिर रहा है तो गिर ही रहा है। लोग इसके सस्टेनेबल यूज को लेकर के जो है अवेयर नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आफ्टर 10 to 15 years this situation is more severe in UP because UP have a humongous population. In unscientific irrigational practices, unscientific irrigational practice, ठीक, तो ये भी आप इसमें अनसाइंटिफिक इरिगेशन प्रैक्टिसेस प्लस इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, वेटलैंड degradation. Wetland degradation, there is an encroachment of wetland as well, because we all are know that कि wetland जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक फिल्ट्रेशन, वाटर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि भाई इसके सस्टेनेबल क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए फॉर द सस्टेनेबल यूज, व्हाट आर द स्ट्रेटजी फॉर द सस्टेनेबल यूज। तो सस्टेनेबल यूज के लिए स्ट्रेटजी क्या है, तो स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल यूज। ओके, तो यहां पर आपको इस स्लाइड में आप बता सकते हो कि व्हाट आर द स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल यूज। तो पहले क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्स स्ट्रेटजी, फॉरेस्ट रिसोर्स स्ट्रेटजी। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो बता सकते हैं कि मॉनिटरिंग करना है, इलीगल पोचिंग को रोकना है, इलीगल माइग्रेशन को रोकना है, इलीगल सेटलमेंट्स को रोकना है, और क्या कर सकते हैं इसमें इंटीग्रेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना है विच हैव टू कंट्रोल दी not only the water resource which also control the, you can say that the which also promote the sustainable use of forest। और क्या कर सकते हैं, जैसे we have to plan climate resilient planning, we have to introduce the climate resilient planning, we have to coordinate and make the strong institutional coordination with linkage of digitalization करके इनको linkage कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, we have to make the strong law, not we have to introduce any new law, we have to implement the law and also monitor it very well। इस तरह का कुछ स्ट्रेटजी आप दे करके बता सकते हैं। की चैलेंजेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पर, और ये भी बता सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट ट्राई टू प्रमोट द कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो एक यहाँ पे मैं बता भी दे रहा हूँ कि यूपी try to promote, UP government also can promote the community forest management। अब बहुत बार आपको ये बात मैंने बता दी है कई सारे प्रीवियस क्वेश्चंस में कि कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, जिसमें हम देखते हैं कि लोकल पीपल्स को इन्वॉल्व करते हैं, ताकि कई बार बताया कि लोकल जो पीपल होता है वो क्या करता है, वो उस पूरे एरिया को लेकर के ज्यादा सेंसिटाइज होता है। तो अगर उसका इन्वॉल्वमेंट होगा तो खुद ही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्टर की तरह निकल के आ जाएंगे। और क्या हो सकता है, प्रमोट दी एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक, एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री। डिजिटल मॉनिटरिंग या बता ही दिया। वाटर रिसोर्स के लिए क्या कर सकते हैं, प्रमोट्स दी माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन में क्या है भाई, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकल इरिगेशन है। प्रमोट दी सस्टेनेबल यूज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। और क्या कर सकते हैं इसी के साथ, स्ट्रेंथन द पोल्यूशन कंट्रोल लॉज। ठीक, ऑल्सो मॉनिटरिंग विद द
सैटेलाइट इमेजेस एज वेल एज द कैमरा कंट्रोल से देखना है. ऑल्सो देर इज अ solid waste treatment plant before entering the toxic elements into the water. treatment plants लगाइए. और क्या कर सकते हैं, protection of wetlands, because wetlands are the natural source of water purification. तो ये सारी बातें लिख करके आप इस आंसर को सम अप कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.